attend. One, two, three, four, five, one. And how many have been coming for the program? Like less than three, four sessions. I mean, just started coming recently. All right. So we have quite a few like recent faces, new faces. No, because then like certain because like in my presentation there are things which I've tried my best to cater to like people with who are coming for the very first time, and a lot of things will be there. I mean, which you will hear. I mean, will be very new for you, something that you've not heard before, and of course, like it can also be like something you've heard, but if I really go into the details of my presentation, it can be like 5 hour long. But I try to like just I mean concise it to make it like 40, 50 minutes long or something like that. So like there will be a lot of questions in your mind also. You can come to me and like I can address them, and even the devotees in the program they can also come and address those questions to you, because I mean a lot of topics will come up, a lot of things will be discussed, and like I mean a lot of them that actually require detailed explanation or detailed knowledge, but like I'll be just touching upon them or just making a brief introduction to them about that to you. And basically there are two parts to my presentation today. uh, one moment, प्रभु हरी बोल. बीच के लाइट्स बंद कर सकते हैं क्या, बीच के लाइट्स साइड के. हाँ, चलेगा, स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन भी मैंने मतलब पूरा यूज नहीं किया है, मतलब आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लिटिल बिट. आई मीन इट्स नॉट दैट एवरीथिंग एंड everything I've explained is like I made PowerPoint for it, but like I mean as much as so that you all can relate, little bit of PPT has been done. And yeah, like I was mentioning, there are two parts to the presentation. The first part will be addressing this topic when good fortune arises, and second part will actually be like I have quite a few stories to share with you, quite a few like you know quite a few personalities. I have a lot of stories, a lot of things to discuss on that regard, practical examples. So that will be the part two of my presentation, and then we'll conclude after that. So and the first question, like when we say the good fortune arises, so when this is the topic, I mean, I want to ask you all, like when you see here that someone from self-excellence program is addressing the topic when good fortune arises. So what do you think the topic will be about? I mean, what kind of good fortune we'll discuss? Can any one of you share, please? Especially, I'm asking from the relatively newer ones who've been coming for a few programs or coming for the first time. जब टॉपिक का नाम व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस है तो उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा, या गुड फॉर्च्यून क्या है, मतलब व्हाट इज द गुड फॉर्च्यून वी विल बी टॉकिंग अबाउट. So you all have any idea? You all can say something. Talking from the ones coming for less than a month, yeah, but few 4 or 5 session maybe, yeah, or even the first timers for that matter. ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, व्हाट इज फॉर्च्यून और व्हेन डज गुड फॉर्च्यून अराइजेस. हाँ जी बोलिए सर. सर इसका मतलब है कि हमारे अच्छे कर्म कब शुरू हो सकते हैं, अच्छे कर्म कब शुरू हो सकते हैं, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, अच्छे भाग्य हमारे कब आ सकते हैं. अच्छा, बढ़िया है. और कोई ट्राई करेंगे? हाँ हाँ बोलिए. हाँ, अच्छा वो आप आंसर दे रहे हो, ओके उसका, ओके आप सोचते हैं कि मतलब मर्सी ऑफ गॉड से मतलब गुड फॉर्च्यून अराइज. ऑल राइट, यस, नाइस. एनी मोर ट्राइज? हम करेंगे वो मिलेगा, तो फिर हम लोग यहाँ बैठे क्यों है, हम करेंगे फिर वो मिलेगा, बस हम बैठे क्यों है फिर. नहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है मतलब. अच्छा, और क्या मिलना, मतलब आपको मतलब क्या लगता है कि
अच्छा, राइट। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम अच्छा करते रहेंगे तो हमारा फॉर्चून उससे मतलब अच्छा रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। सही है, अच्छा है। और कोई ट्राई करेंगे? लेस एफर्ट्स में मोर रिजल्ट्स, आप एम एस धोनी से इंस्पायर्ड है? मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट, effectivity. Our session will be about effectivity. Nice, interesting point. I mean, इंटरेक्शन का यही फायदा रहता है ना, पता चलता है ऐसे सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाहर आते हैं। यस। One or two more tries will be nice. I mean, especially from the like recent attendance, like I said. कर्म अच्छे हो तो भाग्य अच्छे हो सकते हैं। ओके। जी, ठीक है। एक लास्ट मैं आंसर ले लेता हूँ और आप ट्राई करेंगे। बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे आप? तो आपका मतलब वही है कि फॉर्च्यून जो है मतलब, तो चलो कर्म अच्छे करेंगे लेकिन फिर उसके लिए भाग्य में आपको ये सब चाहिए। पूछ रहा हूँ मैं, मतलब क्या इस तरफ मतलब अच्छे रिजल्ट ये है क्या, मतलब फिर कर्म अच्छे ठीक है वो एस्टेब्लिश हो गया, बट देन इस, अच्छा आपका कहने का मतलब भाग्य का मतलब भगवत प्राप्ति। आपके जो मन में है बोलिए, मतलब एकदम ऐसे सोचिए मत, एकदम इसको ओपन एंड रखते। वट एवर यू फील यू कैन से। ये फॉर्चून है तो बोलिए फॉर्चून है करके, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, जो सोचते हैं वो बोलना है आपको, इसमें क्या है फॉर्चून सब। और आप क्या मानते हैं? राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है, इन्होंने बहुत एक्चुअली क्या है कि इन्होंने जो बात बोली है, दैट बिकम द बेसिस फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू एड्रेस। ठीक है, आपने बोला है कि मतलब प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो दिख रहा है आपको, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई बोर्ड मीटिंग्स कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट में है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इसको आप लिविंग बोलोगे कि लाइफ बोलोगे? सोचिए, थोड़ा एक आध मिनट दीजिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड दीजिए, सोचिए। इज दिस लिविंग और इज दिस लाइफ? आप प्रभु सबका आंसर लेंगे अभी, आप बोल दिए थोड़ा। यहाँ पे और भी कितने कुछ 60-70 लोग हैं, तो जितने भी हैं मतलब आई डोंट नो, एक एस्टिमेट बोल रहा हूँ, सभी के आंसर देंगे। अगर उनको लक्ष्मी नहीं देंगे, किसी और चीज में लक्ष्मी देंगे, तो फिर वो उनका लाइफ रहेगा? तो मतलब अगर सिंगर को कुछ और करना पड़ रहा है तो वो उसका लाइफ नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे हैं? आप कुछ बोल रहे थे? ओके। मोर ट्राइज, मोर पर्सपेक्टिव्स, मोर पार्टिसिपेशन। परीक्षित प्रभु,
ठीक है, लिविंग है ये तो सब लोग मानते हैं, पर कोई कोई लोग बोलते हैं कि जब उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो किसी चीज में तो वो लाइफ भी होता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो उसमें आगे हम लोग देखते हैं। मैं क्या है कि सारे पॉइंट्स माइंड में रख रहा हूँ। इन्होंने पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस बोला। इन्होंने बोला कि मतलब जो चीज़ क्या बोलते हैं, जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो वो लाइफ जैसे बन जाता है, मतलब खाली लिविंग नहीं रहता, ऐसा आप बोलते हो, राइट? एक मिनट। हाँ, बोलिए। जैसा कि जिसमें स्वार्थ छिपा होता है वो लिविंग होता है, जिसमें निस्वार्थ होता है वो लाइफ। जो निस्वार्थ होता है वो लाइफ है, जो स्वार्थ होता है वो सक्सेस, वो अभी की। ओके। नहीं, उसको उसका जिससे बहुत। हम अपनी कुछ ऐसी लिविंग जिससे हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं वो लिविंग। और लाइफ का मतलब जिससे हमें कुछ मिले ना, हमें निस्वार्थ उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति लगे हैं, वो लाइफ। चलो ठीक है। थोड़ा मैं एक्चुअली क्या है कि चाहूँ तो ये सबको अभी क्लैरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सा मैं उलझा के इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आगे जो कंक्लूजन होगा तो उसमें क्या है कि फिर सबका एक ये होना चाहिए कंसेंसस। और क्या है कि अभी एक थॉट प्रोसेस, अभी क्या है कि एक ये चल रहा है, चर्निंग चल रहा है एक। तो उसमें फिर क्या है कि चर्निंग प्रोसेस का एक, हर चीज़ का एक समय होता है। चाहिए तो क्या है कि फट से मतलब ये नहीं वो नहीं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के मैं बात खत्म कर सकता हूँ। पर अभी क्या है कि कुछ लोग उलझे हुए हैं, तो या क्लैरिटी नहीं है, तो वैसे ही रखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, ये सब अभी माइंड में रहा। अभी अभी आप बताइए कि अभी तक जो बात हुई है, तो इसमें ये पूछते हैं कि वेन आर यू रियली फॉर्चुनेट, मतलब क्योंकि क्या है कि चलो मतलब मटेरियल, अभी तक हम लोगों ने मटेरियल पर्सपेक्टिव दिया है, पर इधर काफ़ी लोग ये भी है जो मतलब, और आप टेम्पल भी आए हो तो आपको आइडिया होगा कि हमारे टॉपिक्स में थोड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट भी होगा, राइट? फर्स्ट टाइमर्स जो भी आ रहे हैं उनको पता होगा कि हमारे टॉपिक में डेफिनेटली स्पिरिचुअल एलिमेंट होगा, मतलब तो थोड़ा नहीं बहुत होगा। बट तो आप सबको माइंड में रखते हुए बताइए कि तीन चीज़ें उसमें, व्हेन आर यू रियली फॉर्चुनेट, ठीक है? उसमें तीन चीज़ें हैं। तो आप सोचिए कि मतलब किस, वो तीन चीज़ें क्या है, मतलब व्हाट आर दो थ्री थ्री थिंग्स, मतलब व्हेन डैश 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 डैश, व्हेन डैश 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 डैश, व्हेन यू हैव डैश, और व्हेन जो भी है। एक मिनट एक मिनट, हरे कृष्ण। सोचिए, तीन तीन चीज़ें। सेटिस्फैक्शन, ऑल राइट। वहाँ पे क्या एक हाथ उठा था, यस यस। सच, ओके, फुल ऑफ इटर्निटी ब्लेस एंड नॉलेज, ऑल राइट। पावर, वन ऑफ द थ्री थिंग्स है, मतलब आप बोल रहे हैं उसमें पावर आएगा, ठीक है? पैशन है तो आप मतलब आप पैशनेट है तो आप भाग्यशाली हैं, ऐसा सोचिए फिर से। आप पैशन है तो आपका भाग्यशाली है, ये कहना चाह रहे हैं। आप पैशनेट है तो आप फॉर्चुनेट है, हो सकता है। Yes. किसी ने पावर बोला, किसी ने सेटिस्फैक्शन बोला, किसी ने फुल ऑफ एटर्निटी ब्लिस एंड नॉलेज बोला, ठीक है? और थोड़ा ब्रॉडली सोचिए, मतलब और जीवन में और क्या चाहिए, मतलब चलो एक डिफरेंट वे में बोलता हूँ कि अभी कंप्लीट लाइफ कब कहलाएगी, चलो उसका उसका आंसर सेम होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो कंक्लूजन में डेफिनेटली वो होता है, लेकिन इस आंसर के लिए क्या होता है? आप सोचिए ना, आपको क्या लग रहा है कि मतलब एक ओवरऑल लाइफ के हिसाब से सोचिए आप कि ये होगा तो मेरा लाइफ फॉर्चुनेट होगा, मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। कौन? कैन यू बी लाउडर? हाँ, वर्शिप किसकी, आपकी की भगवान की? आपकी वर्शिप हो या भगवान की वर्शिप हो, किसकी? मजा आ रहा है यार सेशन में। नहीं, किस, आप बताइए, आप सत्य होके बोलिए, अगर अपनी वर्शिप चाहिए तो बोला हाँ मेरे को वर्शिप चाहिए करके। शर्माइए। हाँ, भगवान की, ठीक है। नहीं है, सब सम्माननीय है यहाँ पे। हाँ, ठीक है।
Right education. All right. बाबा जी, जब आप सामने वाले हर एक इंसान में भगवान का रूप देखने लग रहा है, आप कभी ये ना सोचो कि इसके लिए मैं ये कर दूं, पूरा हम्म। ठीक है, एक दो आंसर और लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यस, बोलिए। लगन होना चाहिए। तो अगर आपके पास लगन है तो आपके पास भाग्य है, आपका कहना कहना है। आप कर सकेंगे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ओके। पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। That is good fortune. All right. Fine. Yeah. I mean, like ultimately, of course, like we'll conclude to like a lot of points which you all have said, and I'll give you the three answers. Okay. Yeah. Yeah. Please. Right direction. All right. I think like a lot of people have like already given the or I mean directly or indirectly almost सभी लोगों ने मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको कवर कर लिया है. So एंड लाइक मेरे को ये आंसर देने के बाद कोई डिसएग्री कर रहा है तो बोलना, ठीक है ना? बिकॉज सेमिनार का फिर मजा उसमें ही होता है, एक टू वे हो, मतलब एक इस तरह से, बट जितना हो सके स्पष्ट हो जाए चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए चीज़ें, तो उसमें क्या सेमिनार का और ये होता है एक आप लोग का समय की जो है मतलब वसूली नहीं, उसको एक शुद्ध वर्ड पता नहीं क्या बोलेंगे, बम्बैया वर्ड में उसको वसूली बोलेंगे। व्हेन यू हैव राइट नॉलेज, काफ़ी लोगों ने बोला है राइट नॉलेज, व्हेन यू हैव राइट पीपल इन लाइफ, आप लोग सोचेंगे ना मतलब क्या है कि ठीक है ये लोग को क्या है कि सेंस हो गया कि एसोसिएशन मिल जाए करके, बट आप लोग को ओवरऑल एक सेंस है ना कि सही लोग जीवन में होना जरूरी है, इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। when you have a lifestyle that leads you to ever increasing happiness, always remain happy, किसी ने सच्चिदानंद क्या बोला था, full of eternity bliss and knowledge, किसी ने बोला था, यहाँ पे एक प्रभु है। सो बेसिकली ऐसा हैप्पीनेस हो जो मतलब लाइक एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, like in terms of eating, like the best pleasure can be like having mangoes, just giving an example. ओके, अल्फांसो मैंगो का सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अब कब अप्रैल अप्रैल का महीना आएगा, हम सब जो है अल्फांसो मैंगो या जो भी मैंगो दूसरा सबका अपना अपना वो होता है मतलब, या जो भी है, या कुछ और भी हो सकता है, कुछ किसी की कोई फेवरेट स्वीट हो सकती है, एक्स वाई जेड बंगाली स्वीट और व्हाटएवर इट कैन बी। तो मतलब वो खाने जाएंगे हम लोग, तो आप लोग काफ़ी सारे लोग मतलब थोड़े आई मीन ओवर द एज ऑफ 18 लग रहे हैं, तो आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो जिन्होंने नहीं सुना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको। तो एज पर दैट कॉन्सेप्ट, आई मीन द मोर यू कंज्यूम the I mean like you consume the first mango, you'll feel it like nectar, you'll feel like, oh, I have not got anything of that sort in this world, or something like that. Or when you say consume the second mango, third mango, fourth mango, the more you consume, the taste, the even, so someone wants to explain that concept, anyone, किसी को समझाना है कॉन्सेप्ट, आप बताएंगे, बताइए। बेसिकली वेरी फर्स्ट चीज जब पहली बार मिलता है, तो जोर से बोलेंगे, इनका आवाज तेज आ रहा है एक्चुअली से। जब पहली बार मिलता है कोई चीज से, इफ यू आर ईटिंग मैंगो या बड़ा पाव कुछ भी, तो वेरी फर्स्ट थिंग एकदम ज्यादा मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करने लगते हो वो मजा चले जाता है, एंड फिर टाइम के बाद ऐसे लगता है यार क्या ही है, ठीक है चलो, इट बिकम्स नॉर्मल फॉर अस। या इन्होंने बहुत सही समझा है, एंड एट वन पॉइंट इट कम्स डाउन टू सैचुरेशन, सैचुरेशन मीन्स देन लाइक either due to like not being able to consume, or due to like not even wanting to consume, even if you're able to, a point of saturation will come basically, that like even if you will be given half a unit more or even one drop more, आप बोलोगे कि नहीं नहीं चाहिए, इस तरह से। So definitely like the devotees, the people who put in this practice basically of the Bhagavad Gita in their life, so they've actually like what we are, something that is the missing link in today's education system, you know जो लिविंग वाले जो है हम लोग को, जो मतलब क्या है कि स्कूल की तरफ से जो नॉलेज मिलता है लिविंग का होता है, ठीक है ना? अब हाँ, अब हम लोग एक एक चीज के ऊपर एड्रेस करेंगे, जो पहले लिविंग और लाइफ की बात की थी हम लोग ने। सो अ लॉट ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल, आई मीन लाइक दे सेइंग कि हाँ ये काम मेरा लाइफ है, सो एंड सो काम मेरा लाइफ है। So if that voice doesn't give you any kind of return, like if it doesn't give you fame, or if it doesn't give you like money or something like that of that sort, recognition, so majority of them will stop indulging in that form of art, or indulging in that form of
occupation, like you will very rarely find someone who's simply like doing musical activities for the love of music, मतलब क्या है कि कभी मैं खाली म्यूजिक इसके लिए करूँगा, मेरे को लोगों की अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, मेरे को उससे कमाना भी नहीं है, बस अपने आप के लिए म्यूजिक करना है। और ऐसे बहुत कम लोग, और उसी इंटेंसिटी से करना, उसी मतलब लगन से करना, या कोई, मेरे को किसी को सुनाना भी नहीं अपना म्यूजिक, बस अपना म्यूजिक करना है। या मेरे को दीवारों के सामने पूरे जीवन भर एक्टिंग करना है, ऑडियंस के सामने दिखाना ही नहीं है मुझे। कौन है ऐसा? कौन कौन मिलेगा ऐसा, समझो ना। तो कैसे उसको लाइफ बोल सकते हैं, मतलब बराबर ना। तो लाइफ वो हो गया बेसिकली, क्या है कि लाइफ समझने के लिए मतलब एक, मतलब गीता, मतलब क्या है कि भगवत गीता इसलिए मतलब क्या है कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक है। I mean, it's the most freely available book. I mean, in the sense that it's written by the creator himself. Basically, it's like a life manual. But unfortunately, the thing is that, I mean, because we've been giving just one kind of education. मतलब हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि सेक्युलरिज्म है, कि हाँ गीता पढ़ाओगे तो फिर जो बाकी 3 स्क्रिप्चर है वो मतलब जो दूसरे धर्म वाले हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारा क्यों नहीं पढ़ा। कुरान पढ़ाएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, हमारा क्यों नहीं पढ़ा है। बाइबल पढ़ाओगे तो वो नाराज, तो उससे अच्छा कुछ भी मत पढ़ो, मतलब बात वो है। तो उस वजह से मतलब क्या है कि ये जो प्रेशियस जेम है, मतलब जिससे क्या है कि एक लाइफ लिविंग मैनुअल है, मतलब वही मिस आउट हो गया। मतलब क्या है कि मोबाइल के साथ मैनुअल है लेकिन लाइफ के साथ मैनुअल ही नहीं है। हम सबकी सुन रहे हैं एक्स वाई जेड ये वो, और सोशल मीडिया के एरा में तो और भी ज्यादा हो गया है। इन द सोशल मीडिया, वांटिंगली अनवांटिंगली वी हर्ड सो मेनी एक्स वाई जेड एबीसी पीपल, some politicians we don't like, some celebrities we don't like, some instagrammer we don't like, झक मार के सुनना ही पड़ता है। लेकिन कृष्णा ने क्या बोला वो सुनने को, और एक आजकल मैं बोलता हूँ मैं क्या होता है, कोई कुछ भी बोल देगा। और ये मतलब ऑफ लेट मैंने बहुत सुना है ऐसा, एनीवन विल कम एंड से एनीथिंग एंड देन दे विल से ये तो भगवान ने गीता में बोला है। अपने मन का बोल देंगे फिर बोलेंगे भगवान ने गीता में बोला है। ये भगवान गीता में बोलते, फिर मैं पूछता हूँ कि कहाँ है गीता में, वो फिर कहाँ पता है मतलब। एंड बहुत सारे आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स भी मिलेंगे, फेसबुक पे फॉरवर्ड भी मिलेंगे, ऐसे कि मतलब ये अपना को टीचिंग डालेंगे, नीचे ही बोलेंगे फ्रॉम द भगवत गीता। So, but if you see Bhagavad Gita actually like given, like it's been given in our institution, in our institution we call it the, like our founder Acharya called it the Bhagavad Gita as it is, you know. उसको मराठी में बोलते जशी आहे तशी, in English it is called, in Hindi it is called यथारूप, means as it is, like क्या होता है कि मतलब भगवत गीता जो भगवान ने ओरिजिनली मैसेज दिया है, so as it is passed down disciplic succession, or so many times like it got lost. So what happens is that since it's an ancient literature, a lot of people have come up with their own commentaries or their own interpretations of Bhagavad Gita. So basically, I mean, what Bhagavad Gita wants to say, that message, I mean, like has to be like passed down in the same form in parampara. एंड इफ यू वांट एविडेंस, फिर बोलेंगे कि क्या प्रूफ है, भगवान 5,000 साल पहले अर्जुन को बोले हैं, वही सेम नॉलेज हमारे पास है, इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं एज इट इज। तो हमारे पास परंपरा का एविडेंस है कि मतलब इनके बाद ये है, इनके बाद ये है, इनके बाद ये है, एंड हाउ दिस नॉलेज हैज बीन इंटैक्ट टिल टुडेज डे, वी कैन शो द एविडेंस टू यू regarding that. So yeah, when you have right knowledge, when you have right people in life, when you have a lifestyle which leads you to ever increasing happiness, um, yeah, that's when you are really fortunate. So all are in agreement with this, like these 3 points. First time was agreement, right? Perfect? All right. So yeah, this forms the basis. We'll go ahead. So yeah, the knowledge of the Gita. Can anyone read this? Okay, only the, I mean, the Sanskrit and Hindi part got mixed up. Okay, the English translation. So, sorry. Okay, English translation in Sanskrit. Okay, that's mixed up. कोई खड़ा होके पढ़ सकता है क्या? आप सेकंड रो में आप पढ़ सकते हैं? आपको पढ़ना है? पढ़िए खड़े होके। ये जो इंग्लिश एक काले में जो दिया है नीचे, दिस नॉलेज दिख नहीं रहा क्या? This knowledge is the king of education. This knowledge is the king of education, the most secret of all schools.
This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully fought. All right. So Krishna himself is saying that this is the king of education, the secret of all secrets. So definitely, like if anyone is deprived of a knowledge which the Supreme Lord himself, the Creator himself, you know, हम सब के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी परम पिताजी जो है वो बोल रहे हैं कि ये किंग ऑफ एजुकेशन है, मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, प्योरेस्ट नॉलेज, ओके, डायरेक्ट पोजीशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, perfection of religion, everlasting joyfully performed. तो जब ऐसा बोल रहे हैं then definitely like those who have not had the access to this knowledge, so when someone of that the level of Lord Shri Krishna, and of course like in Bhagavad Gita, like the Lord also, why he is the Supreme Lord, that also like is addressed first of all. So like I mean, all right, even if someone doesn't have that understanding that Krishna himself is the Lord, okay, fine, he is the avatar of Lord Vishnu or someone like that. Even on that level, if someone is saying that this is the king of education, so we can come into agreement like कि मतलब like knowledge में हम एक part है जो हम miss कर रहे हैं अपने life में, right? क्योंकि जिसको exposure नहीं मिला है गीता का, तो definitely something is missing. मतलब कुछ है इसमें जो अभी तक मतलब हम लोग को अपने conventional education जो हमें खाली living सिखाया है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, समझ सकते हैं ना इसी के बेसिस में। जब भगवान इतना सब बोल रहे हैं, एनी डिफरेंस इसमें कुछ है डिफरेंस? किसी का कुछ ऑल्टरनेट ओपिनियन है इसमें? नहीं भाई। Krishna also says in the Bhagavad Gita the purpose of all the Vedas. मतलब सारे वेदास जो है, 4 Vedas you all know, right? Anyone can name the 4 Vedas for me? Yes, yes. Like others. आपको पता है, आपको भी पता है, मालूम है दूसरे 4 वेदास कौन से? हाँ बोलिए। ओके, हाँ, ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो लाइक ठीक है, ये सब पढ़ लिया, लेकिन ये पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है? ये एक मिनट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यही क्रम है ना प्रभु? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आज को इसमें कोइंसिडेंस नहीं देख सकते, जिसका नाम और बड़ा वो बाद में। ये कोइंसिडेंस है, इंटेंशनल नहीं है। रिग, RIG 3 वर्ड्स, साम साम 4 वर्ड्स, 4 अल्फाबेट, मतलब याद करने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। यजुर, फिर अथर्व, ये है इसका। तो कृष्णा बोलते हैं, I am seated in everyone's heart. From me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. So through this, like even the aim of reading Vedas is established basically, and one of the reasons why like Gita is said to be like the essence of all, like Gita and Srimad Bhagavatam is said to be like these are the two scriptures, Like if you go on to read each Upanishad, I mean Upanishad, sorry, if you go on to read Upanishads, there are 108 Upanishads. If you go on to read Puranas, there are 18 Puranas. If you go on to read Yajurved, I mean sorry, the 4 Vedas, there are 4, I mean the Vedas, there are 4 Vedas, and like they're not like Vedas are not like little bit like कोई छोटे book नहीं, मतलब lakhs and lakhs of shlokas are there basically. So if you want to get essence of all those scriptures, Gita is said to be like Gita Upanishad is said to be essence of all Upanishads, and Srimad Bhagavat Mahapuran is said to be the essence of all the Puranas, and both together actually consist of combined the essence of all the Vedas basically. So in this scripture, so one of the purposes that we have to know, like Krishna says that I am to be known of all Vedic studies.
and he is the compiler of Vedanta. Vedanta is what? The Vedanta Sutra is the conclusion of the Vedas. Vedas पढ़ के जो conclusion जो है concluding scripture है. That is the Vedanta Sutra. So Krishna is saying he has only compiled Vedanta, and I am the knower of the Vedas. I mean, there can be many knowers of Vedas, but one who knows knower बोल रहे तो ना perfect knower of Vedas. You know, who knows Vedas as they are. I mean, in the right extent. So this is the conclusion made by. This is the verdict of Krishna as per the purpose of all Vedas. Now we come on to the 5 subject matters of Gita. So the 5 subject matters of Gita are Ishwar or the Supreme Lord. Means in Gita we study who is the Supreme Lord and about his characteristics, about his qualities and everything, about his nature, about his energies, you know, so about his personality and its expansions and everything. So Ishwar, Jiva, the living entity. So a detailed study about the Jiva, the living entity. In fact, like लोगों को पता है कि हाँ कि a lot of people have a faint idea, at least like you know people who know like Gita little bit, in a layman's level also people know that Gita talks about soul. बट देन हम लोग जब गीता पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इंटेलिजेंस माइंड ये सब के बारे में भी जो नॉलेज गीता में दिया है वो कहीं और नहीं दिया है. सोल एवरीवन नोस कि लॉट ऑफ पीपल से कि हाँ कि गीता में दिया है आत्मा अमर है शरीर नश्वर है. दिस वे लाइक जिसको एकदम ही ब्रीफ आइडिया उसको भी मालूम है बट देन लाइक इवन द लिविंग एंटिटी विच ऑल्सो कंसिस्ट द माइंड इंटेलिजेंस ईगो उसके बारे में भी नॉलेज आपको प्राप्त करना है कि हमारा मन क्या है बुद्धि क्या है ईगो क्या है तो उसके लिए भी द सोर्स इज गीता. देन द मटेरियल नेचर द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड बेसिकली. फिर बाद में द काल एटर्नल टाइम टाइम के बारे में भी स्टडी मतलब जो एटर्नल टाइम मतलब जो नॉट लाइक 365 डेज और 24 आवर्स ओनली एटर्निटी एटर्नल टाइम का स्टडी एंड कर्म एक्टिविटीज. कर्म का तो सबको पता है गीता का जो है मतलब थोड़ा फेंटली एक आइडिया रहता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो भी काफी लोगों को ब्रीफली पता रहता है बट देन लाइक डिटेल एक्टिविटीज बेसिकली द इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मा बेसिकली यू नो a lot of people they have this questions regarding karma. I mean a lot of queries regarding karma. So it's very detailed and integrally discussed in the Gita. The Supreme Lord, the living entity, material nature, eternal time and activities. Ishwar, Jiva, Kal, Prakriti and Karma. These are the 5 subject matters of Gita. So जो हमारा first था कि fortune, you will become fortunate by if you have the right knowledge. So definitely like you know if you don't have knowledge of this तो कैसा सिचुएशन रहेगा लाइक यू डोंट नो हु यू आर यू डोंट नो हु योर क्रिएटर इज यू डोंट नो द क्रिएशन. जब इसका ही नॉलेज नहीं होगा तो इट विल बी लाइक यू नो स्पेशली नॉट नोइंग योर सेल्फ बाकी सब छोड़ ही दो. इफ यू डोंट नो योर सेल्फ उसके बाद हमारे एक्टिविटीज कैसे होंगे यू परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी विदाउट नोइंग हु यू आर. इट विल बी लाइक सॉल्विंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ. जैसे अलजेब्रा सबने पढ़ा होगा स्कूल में लाइक 9-10 तक तो मैथ्स आई थिंक सबको कंपलसरी होता रहेगा. तो उसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ होता है ना. तो उसी को आपने गलत लिख दिया वहीं पे और आगे आप उलझाने सुलझाने जो भी जाओ करके उसी में आपने मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ लिख दिया आपने. तो आगे आप क्या करोगे इक्वेशन का मतलब कोई भी इक्वेशन हो मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने गलत कर दिया. सो यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ मतलब देयर इज नो होप. आई मीन whatever you will do मतलब some way or the other it will be erroneous basically. Now our identity. Spiritual being or human being? Answer with reason. आपको क्यों लगता है कि आप अगर कोई बोल रहा है कि हमें ह्यूमन बीइंग हो तो क्यों हम ह्यूमन बीइंग हैं और क्यों हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं? प्लीज आंसर विद रीजंस एंड आई वांट हैंड्स मतलब ऐसे. हाँ हैंड्स उठा के कोई बोलिए. आपके पास आते हैं.
आपके पास भी आते हैं। सेम सेम पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और भी लोग। ट्राई कीजिए, मतलब हम लोग कुछ करने नहीं वाले आपको। आपके पास भी आएंगे। ट्राई कीजिए, ह्यूमन बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग विद रीजन। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप। ठीक है, जो बोल रहे हैं वही बोलते हैं, और क्या। यस। आप बोलिए। जो ह्यूमन बीइंग, जब हम अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं तो ह्यूमन बीइंग है। यदि हम अपने आप को प्रभु की सेवा में समर्पित कर देते हैं तो हम स्पिरिचुअल बीइंग हो जाते तो आपका कहना है जब 9 से 5 ऑफिस में रहते तब तक हम ह्यूमन बीइंग है, ऑफिस से बाहर निकलते हम स्पिरिचुअल बीइंग हो गए। हैं। ये जो ह्यूमन बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग की बात कर रहे हैं, ये तो मानव जीवन है और ये आध्यात्मिक जीवन है। अरे बट नहीं, आपने जैसे पहले बार जब हम संसार के कार्य करते तो हम ह्यूमन बीइंग है। अपनी शारीरिक जरूरतों को जब हम पूरा करें, अरे प्रभु जैसे तो खाना सुबह से है, ही। खाना है, कपड़ा है, आवास है, ये सारे तो हम जब वॉशरूम में होते तो हम मतलब ह्यूमन बीइंग है लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हम लोग स्पिरिचुअल भी हम बार्गेनिंग कर रहे हैं दुकान में तब हम स्पिरिचुअल बीइंग नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है। नहीं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, सनातनी दृष्टि से, तो हम स्पिरिचुअल भी सनातनी दृष्टि से। अच्छा, ठीक है। क्योंकि कहता है कि हम ह्यूमन बीइंग है तो क्या है मतलब फिर वो। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, उससे डाउट क्लियर हो जाएगा। वी आर नॉट just human beings having a spiritual experience, but we are spiritual beings having a human experience. मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। We are not just human beings having spiritual experience, but we are spiritual beings having human experience. Because as per Bhagavad Gita, of course, like I mean, काफी लोग डार्विन का वर्जन राइट समझ रहे होंगे, इन टर्म्स ऑफ लाइक एवोल्यूशन, यू नो, कि हम लोग बंदर थे पहले या एप्स थे, जो भी है, फिर इवॉल्व होते होते हम लोग मंकी मैन वगैरह होते हुए हम लोग ह्यूमन तक पहुंचे, मतलब तो साइंस में हमें वो सिखाया जाता है, ठीक है। बट लाइक वैदिक कंक्लूजन इज दैट वैदिक जो वैदिक वर्जन है वो ये है कि सेम स्पिरिट सोल passes through an evolution of 84 lakh species. Okay, mammal, aquatics, insects, microorganisms, फिर अपना aquatic, हाँ, तो दिस वेरियस है, मतलब इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज के थ्रू हम लोग जब निकलते हैं, ह्यूमन के ही बोलते हैं कि आई थिंक 6 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज है, राइट। तो टोटल हो गया, पर उसमें से मनुष्य योनि ही 6 लाख प्रकार के होते हैं ना। 4, मैंने 6 सुना। 4 लाख, ओके ओके, हाँ। तो ये ओनली ह्यूमन बींग्स आर 4 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज, मतलब तो ये सब मतलब एवोल्यूशन होते होते वी गेट लाइक human this thing living, and we see that, you know, in all microorganisms basic characteristic remain the same: eating, sleeping, mating, defending. Okay, ahar, nidra, bhay, मैथुनम च. Okay, खाने को, these are the 4 basic needs of all living entity. If you cut any living entity it will bleed. Okay, मच्छर को भी मारेगा तो थोड़ा ड्रॉप ऑफ खून हाथ में आता ही है, तो वही है। So like these are the basic characteristic of all, like a common जो होता है ना sameness, that is because of the spiritual nature of every living entity. And yeah, of course, like as long as one is in the human body, he is having a human experience. I hope this makes sense to you all. Once again, I repeat, we are not just human beings having spiritual experience, but spiritual beings having a human experience. All right. Yeah, in this slide, we can see the whole evolution process, how the jiva it goes through the different species. Just for 10 seconds, like you can have a look at this. All right. Also, like, you know, another question which Bhagavad Gita answers is that our own origin, you know, like
I mean, like, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्- मूर्तया शतभवन्ति ya. It should be understood that Tasham Brahma Mahad Yonir Aham Bija Pradapita. It should be understood that all species of life, or son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and I am the seed giving father. तो एक हमारे प्रभु जी है, वो ऐसी मजाक में बोलते हैं कि रिश्ते में हम तुम्हारे परम पिता लगते हैं, नाम है श्री कृष्ण, ऐसे बोलते हैं. सो तो कृष्ण इसमें मतलब एक वर्डिक्ट दे रहे हैं, थ्रू दिस भगवत गीता ही इज सेइंग दैट ही इज मेकिंग दिस क्लेम दैट आई एम द सीड गिविंग फादर. एंड मतलब ये दो चीज़ें बोल रहे हैं कि जो भी स्पीशीज है, मतलब उन्होंने 84 लाख स्पीशीज की बात की थे, तो दे आर वो मतलब प्रकृति जो है, नेचर है, जो वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गीता है. सो बाय बर्थ इन दिस इज द सोर्स वेयर द बर्थ इज टेकन, एंड कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर. मतलब दोनों का रिलेशन आप समझिए, मतलब द लिविंग एंटिटी, द नेचर, एंड द सीड गिविंग फादर लॉर्ड श्री कृष्णा. तो ये बेसिस बताया गया है गीता में बेसिकली. And yeah, of course, like Krishna also discusses various forms of like yoga. Another subject matter is yoga, discussion about yoga. So among those who like attending for the very first time, can you all tell me what do you mean by yoga? What is your understanding of yoga? Someone says something? नहीं बताइए, मतलब आप क्या समझते हैं योगा का क्या मतलब होगा, मतलब हाँ, control of mind. Okay, that is okay. Yeah, yes sir. Meditation. Okay, but like his understanding of yoga is control of mind, which is okay. All the asanas for the peace of mind. Okay. Yes. Yes, yes, आप बोलिए. सर प्रभु योग के माध्यम से भगवान तक पहुंचना. Okay. योग के माध्यम Yeah. यानी ध्यान लगाना. ध्यान लगाना. Okay. Yeah. I mean, like, yeah, you said like, okay, yoga means like all the eight asanas, जो मतलब different to basically all the asanas, okay, those physical asanas which will lead to peace. That's your understanding. Right, right. Yes, sir. knowing your own physical, mental capabilities and then connecting it with the external world, knowing and then helping yourself for the betterment of the world. Yeah. Basically, yoga means to connect. Yoga means to connect, and the perfection of yoga is to connect with the Supreme, basically. So, yeah. So yoga means to connect, and the perfection of yoga is to connect with the Supreme. And हाँ, उसमें मतलब जो है, मतलब जो 8 different forms of आसन होता है, I mean asanas आते हैं. I mean asana is one of the 8-fold practices of yoga basically. Yeah, the different paths to yoga basically, and dhyan lagana, and peace of mind, like to make the mind peaceful, to do. That's just those are different paths of yoga. The ultimate conclusion of yoga is to connect with the Supreme. So there are different yogic processes given in Bhagavad Gita. Like, of course, like this is something which I am like, for a Bhagavad Gita student, for a lot of them, it's like a spoiler, basically. I mean, because कोई भी भगवत गीता स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है, तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा आता है. ध्यान योगा, अष्टांग योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा. So the different types of buddhi yoga, so different kinds of yoga come in place. But then everything, all forms of processes, they conclude to bhakti. And Krishna has said bhakti yoga to be the conclusion of all Vedas, of all the practices of yoga. Sorry, bhakti yoga, or the and bhakti yoga can also be said to be devotion, loving, unconditional devotional service unto the Supreme Lord, to connect basically, to perform activities for the pleasure of Supreme Lord. Okay. That is said to be like, and of course, like to how Krishna comes to that conclusion, that you can like regularly attend classes and programs, because like it's not part of my, this.
So yeah, it's a conversation that goes on for a long time. It can take a lot of time. So yeah. So Krishna says that one can understand me as I am, thus as the supreme personality of Godhead only by devotional service. Devotional service means rendering activities out of devotion for the pleasure of Lord. And when one is in full conscious of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. So या सो बेसिकली लाइक वो नॉलेज में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने एड्रेस कर लिया है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, हम लोग ने तीन चीज़ों की बात की थी, राइट। कैन एनीवन रिमाइंड मी व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट क्विकली, लाइक आई थिंक टाइम निकल रहा है। थ्री थिंग्स फॉर, हाँ हाँ बताइए। right knowledge, हाँ right people, and having everlasting happiness. हाँ हाँ। So on the basis of like the few verses of Bhagavad Gita we discussed, we can conclude, right? कि मतलब है कि part as per the version of Gita, we've covered part one and part three, right? So now like my next set of discussions, and I think I'll just go through very quickly, because that can be a class in itself, but session in itself. But I'll try to be as quick as I can for the part two. I mean, I'll be telling stories like very quickly. I'll be going through stories of different personalities from different yogas, and yeah, and how like their life changed, basically how their life got transformed after coming in touch with the right in the right association, basically. I think everyone can see this, right? This is a photo. I mean, just a picture of sage Valmiki and Ratnakar Laku. Valmiki, as many of you all must be knowing, or maybe all of you all must be knowing, is the author of Ramayana. Yeah, someone said Ramayana. Yeah, exactly. So basically, Valmiki was earlier the robber or the dacour. He used to indulge in killing and robbery, basically, and his name was Ratnakar. So his story goes that that I mean, he thought that to get quick money or to make a good amount of money, he will rob or he will loot, and that's how like or make a living, or if required, he'll also kill people. He'll either scare them and take their money, or he will kill them, and that was his idea of maintaining his family, basically. So he came in touch with Narad Muni at one point of time because he used to go to forest to hunt, and there he met Narad Muni, who was having veena in his hands and wandering around in the forest. And as he met Narad Muni, uh, he told him that I want all your riches. So he said that first of all, I'm a Brahmana, so like I'm not scared of your threats. First of all, you can do whatever you have to do. I have faith in my Lord, in my Lord. So that way. And he said that I don't have any possessions either. I mean, this names of the Lord is my only possession. But he said that that you are indulging in this act. So for whom are you indulging in this act? So he said to fulfill the belly. I mean, to fill up the belly of my family. So for my family's sake. So then he said he asked कि मतलब ठीक है आपको अपनी फैमिली के लिए करते हो तो आपकी फैमिली से पूछिए कि will they share your sinful reactions, you know आपके पाप में वो मतलब आपको मतलब भागीदारी लेंगे क्या मतलब. So he thought that certainly of course मतलब मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो मेरा पाप नहीं बांटेंगे क्या इस तरह से. So he said, are you sure? Narad Muni said, are you sure? You go and confirm, I'll wait here. तो देन ही सेड कि अरे आप मेरे को बना रहे हो ऐसे ही करके मतलब आप भेज दोगे आप भाग जाओगे करके. बोला नहीं 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 आप मेरी बात पे यकीन करो मैं खड़ा रहूंगा मैं भगवान का नाम में तो झूठ नहीं बोलता हूँ इस तरह से. तो आई मीन सो ही वेंट एंड ही आस्क्ड हिज you know he went and he asked his uh, children and wife that will you be taking will you be sharing my sins also? You're sharing my riches, my earnings, and I'm spending on you. So will you be sharing my sins also, sinful reactions also? So he said that they said that no, I mean we thought that you are our maintainer, you take our responsibility. So आप जिम्मेदारी हमारी लेते हो तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी हुई ना. That way. So that really opened his eyes actually. He said that I am indulging in some gruesome act, and like of course like even like the most ignorant people they have little knowledge that okay there is some sin kind of thing or something like that. So he thought that that it's no, and he actually like had a lot of regret actually. What have I passed my life in?
So then, like Narad Muni tells him that now you follow what I say. He said that you utter the name of Lord Ram, and this utterance of Lord Ram, the names of Lord Ram, it will uh, free you of all sinful reaction, and it will give you ultimate happiness. So then, like he tried to take his name. A lot of you all know that he was not able even to take Lord's name. He attempted to take his name in different ways, but he could not. So he said, "चलो मैं मरा मरा बोलता हूँ." So he said, "मरा मरा 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 मरा." So that way, like constant chanting, and actually, like he was really absorbed in chanting. Okay, he was like, I mean, they said that a whole ants had formed a whole like. From all four corners, a hill of ants had practically been formed. Ant hill had been formed. He was so absorbed, and he actually like this constant meditation, and yeah, lifetime also, like nowadays we can live to only till 100 years, so we cannot like meditate for so long. I mean, his meditation went on for thousands and thousands of years, and it came to conclusion that he became actually qualified to write poetries on Lord Ram, and which concluded in him writing about the whole katha of Ramayana, basically, whole Ram katha, Ramayana katha. So we can see how like this two things. I mean, coming in touch with the right people, and having faith in them and obeying them, how it created transformation in his life. You know, we can see this whole ant hill had been formed, and this great. And by the way, like this is only said to be the original Ramayana. Okay. Now we'll talk about the difference between Vibhishan and Ravan. So basically, like Ravan also like had the good fortune of coming in the physical presence of Lord Ram, living in the same era of Lord Ram, and he also had the fortune of getting forgiveness. Lord Ram's actually proclaimed that if Ravana comes and seeks forgiveness from me, I will I will forgive him, and I will make peace with him. I will not punish him for abducting my wife, Mother Sita. But Ravan was in the false illusion. He said that पहली बात तो क्या है कि we used to consider Vishnu or his incarnation to be his enemy first of all. And second thing was that out of illusion, he used to just see the Lord in his external form of being, mendicant, a sage basically, Vanvasi. So yeah, so he said that no, I will not. And Vibhishan was someone who volunteered, came and seeked uh, the sangha of Lord Ram. So that was the difference between Vibhishan and Lord Ram and Ravana. Eventually, for the kingdom for which like he fought so much and to save that kingdom, Ravana endeavored so much. It eventually went to Vibhishan that way. There's another story of Bhakta Dhruva, a very interesting story. Bhakta Dhruva was like one of the son of one of the two wives of a king called Uttanapad. The story is from Bhagavad Mahapuran. And King Uttanapad actually, like he was favoring the stepmother of Dhruva more than himself. Dhruva Maharaj is is given in the Bhagavatam, Canto 4 or Part 4 of Srimad Bhagavatam. So Dhruv Maharaj was basically, he was the less favored child because he was not born from the womb of his favorite wife. Basically, he wanted to come on the play on the lap. Okay, a very simple childish desire of wanting to play as a child, 3, 4, 5 year old child, on the lap of his father, Uttanapad, King Uttanapad. But his father said, before his father could even take him or reciprocate with him, his stepmother, so Suruchi. His mother's name was Suniti, his stepmother's name was Suruchi. Suruchi came and she just put away Dhruva, and then Dhruva was very much anxious because his father did not protest. He was so blinded by the love or attraction or infatuation or whatever you can say of his stepmother or his first wife that and that lady also proclaimed that in order to play on your father's lap, you have to be born of my womb in the next life. And his father did not say a word. He did not stand up for him. He sat there spineless, basically, didn't utter a word. So he was very angered, and he was having that desire that I want a kingdom greater than my father, and his father had the kingdom of almost the size of Lord Brahma. So he wanted a kingdom even greater than Lord Brahma, basically.
And his mother said that with whatever desire you have, you go to Narad Muni. So he went to Narad Muni, he expressed his heart. He said that I want this desire. And then Narad Muni said that you go to the forest and chant and engage in meditation and absorb yourself in uttering the name of Narayan. So he was very much absorbed, and of course there were tests and tribulations and everything. But eventually, you know, what happened was that the Lord appeared within 6 months of his meditation. Within the period of 6 months, the Lord appeared. And when he saw Lord, he said that I was actually hankering for pieces of glass. कांच के टुकड़ों के लिए मैं हैंकर कर रहा था, लेकिन मिल क्या गया मुझे, गोल्ड मिल गया मुझे, मतलब क्या कि आई मीन दैट किंगडम ऑफ लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ योर दर्शन, इन फ्रंट ऑफ योर एसोसिएशन, in front of your devotion, this kingdom of Lord Brahma, a whole separate planet, in fact, you know, is as good as uh, pieces of broken piece of glass in front of gold. So we can see from the story like two, three things, we can learn from this story. First was that right association of his mother, basically. His mother led him to Guru, Narad Muni. And third was honesty. Okay, fine. Like a lot of people, they have this honesty, अरे गुरु आ गए सामने, हम लोग के अंदर अभी जो भी खोट है करके उसको छुपाना रहेगा, इस तरह से, ऐसे सब, मतलब they have this kind of thing कि मतलब he said what was there in his heart, what was there in his mind, he said. And then was the process, of course, the process with the guru told him with the right association. So this is another, like, and eventually he got the realization, he got the ultimate happiness, that everlasting happiness, which we talk about. Next is the story of Prahlad, no, yeah, Bhakta Prahlad. So this is very long, actually. There's a seventh canto, the seventh part of Bhagavatam, which is totally dedicated to Bhakta Prahlad. I'll be as quickly as I can. Prahlad was born to a demon named Hiranyakashipu, but when he was in the womb of his mother, he heard the narrations of the Lord, Supreme Lord, while being in this mood, when his mother was, again, like Narad Muni was the association. And so when he grew up, he actually like came out of his mother's womb as a devotee. And wait, how much time we have actually little extended? So I'll try to wrap up. All right. So when he came out of his mother's womb, actually, uh, yeah, when he came out of his mother's womb, uh, he when he came out of his mother's womb, he was already like, I mean, chanting the Lord's name all the time, remembering the Lord all the time. I mean, even when he went to his school, he would make his demoniac friends, and his father was a top class demon, avowed enemy of Lord Vishnu. So he would like ask his father to chant Vishnu's name. He would ask uh, his friends to chant Vishnu's name, and they did not go down well with his father. And his father, by the way, wanted immortality, and he did tapasya. And when Lord Brahma appeared, he said that I cannot grant you this thing of immortality, the boon, the vardhan of immortality. So then he concluded that I'll ask the moon in such a way that he'll have to give me, and it will be as good as immortality. So he asked for the boon that I may not die in the night or in the day, on the ground or in the air, on wait, कोई कुछ बोलो, neither inside nor outside. What else? हाँ हाँ. चौखट पे रहे, ना पुरुष मारे, ना पशु मारे, ना अस्त्र से, ना रास्ते शस्त्र से ना शस्त्र से, अंदर न बाहर. ना चौखट पे. Yeah. Yeah. So all these conclusions basically, like, he thought that when I ask such kind of boon, I'll be immortal only, like, it's indirectly, and he'll have to grant me. So then, okay, he said, Tathastu, you have this boon. So he thought that, okay, fine. So like two things was that, first of all, that he thought that he's greater than the Supreme Lord and his creation. He is just cracked. उसको एक cheat code मिल गया basically इसको manipulate करने का, Lord के creation को manipulate करने का एक cheat code जैसा मिल गया उसको, एक प्रोमो कोड जो अगर हम लोग को मिलता है उस तरह का कुछ मिल गया, ऑफर जैसा कुछ. And first of all, second thing was that he was very aggressive towards the devotees. So that led to the Lord appearing as Lord Narsingadev, who was half man, half lion incarnation. He killed him through his nails, which was not technically a weapon.
and he put it on his lap and just crushed him basically. And Bhakta Prahlad, you can see that this guy, and you can see Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, when he asked Lord about, you know, what boon do you want? So he said that I don't want anything from you, Lord. I just want that my father may not suffer in the hellish planets, because it's a lot of suffering going to hell and going through all the sufferings. So then Bhakta Prahlad Maharaj said that, basically, mm, yeah. So then Lord Nrsimha they've said that uh, seven generation before and after you have already been liberated by me. So there's another like story of association basically. Yeah. Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Kali Yuga avatar, like the basically the incarnation that spread the Hare Krishna Mahamantra. And in our ISKCON, actually, we follow under his parampara. So just briefly, I mean, like I mean, like there are a lot of things about Lord Chaitanya, and the time is not permitting. So I will just say that Lord Chaitanya Mahaprabhu basically he was at his youth he was a pandit, Digvijay pandit practically. He lived in the town of Nadia, West Bengal, Mayapur, and he had practically defeated all the scholars in his area. And but at the same time, of course, like he was very devotional also, and so that way. But when he came into touch with his uh, Guru Maharaj, his spiritual master Ishwar Puri told him that you are fool number one. Why are you running behind Vedanta? You should chant the Hare Krishna Mahamantra. And from that day, he became a madman, just traveling around every time, just morning, evening, chanting Hare Krishna. He forgot eating, sleeping, everything. He just got maddened by the ecstasy. Like, ecstasy is a very different kind of happiness. बेसिक हैप्पीनेस मतलब वही है कि मतलब जो हाई एक्सपीरियंस करने के लिए जो गलत काम करते हैं वो हाई मतलब सोचो अगर आपको मतलब भगवान की भक्ति में उस तरह से मैडनेस लिटरली मतलब that was his once he met his guru said but first he had to take the smashing from his guru that you are fool number one. And after that, of course, like then like there's a whole life to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and his whole life was about delivering the Hare Krishna Mahamantra, the Mahamantra, the mantra for eternal joy, basically. This is our founder, Acharya Srila Prabhupada, when he came in touch with his spiritual master in 1923, the founder of ISKCON. He went to his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So at that time, he was wearing khadi, and he was actually the uh, part of Gandhi's movement. Part of Gandhi's movement, he was, and so he was part of Gandhi's movement, and he had of that ahimsa or boycott or we are in British rule, those kind of ideas he had. So when he went to pay his obeisance, and at that time, of course, he was not a committed to spiritual path or anything. But he had that culture that when sadhu comes, pranam karna hai, matha dekhna hai. So when he offered panchang pranam, so before he could get up, his spiritual master said that you are a very learned man, very bright man. You have to spread the message of Bhagavad Gita in English language all over the world. Before seeing him having a conversation, just when he's having pranam, before he could get up, this is what he said. And when he got up, of course, like he had argued, he said that we are coming from a slave country. We are coming from a slave. We are under the rule of British. So who will take first? We have to get freedom, independence. Only then we can uh, yeah. Only then we can what do you say? Our message will be taken seriously. So he said that message of Gita is of eternity, and it doesn't depend on the external condition. Our message of Gita has nothing to do with India. It has nothing to do with our current political position. It's a message of the spiritual being actually, and it doesn't have to wait for it. And it's very urgent. It's more urgent than even getting freedom. So Prabhupada then once the meeting got concluded, Prabhupada, his friend asked him, the friend who had taken him, that what do you make out of it? So what he said was that the message of Gita is in the very right hands, and he thought that I will submit him as my spiritual master.
And of course, like with that meeting or with that submissiveness, there was a revolution basically. Today, this message is like we are discussing this message over here, and there are more than 700 centers. And of course, there's a very different story to it. That how Prabhupada went at the age of 70 with just £7, $7 in his pocket. That's another story for next time, another time. And yeah, some of the disciples I wanted to discuss, but I mean, I'll just run through them. The Bhakti Swarup Damodar Maharaj was a scientist, and he had met Srila Prabhupada in the West, and he was able to fight with the Nobel laureate. One of the Nobel laureate, he was saying that he was having a discussion that how, you know, uh, life can be created by different chemicals. Life comes from chemicals. So he challenged that Nobel laureate. I forgot his name actually. Parikshit, were you able to research? Okay, fine. So there was this Nobel laureate. He was claiming that life comes from chemicals. Life can be come from chemicals. So he said that I'll give it this chemicals. You make life and show me. So he publicly defeated actually, and like he has done a lot of work actually in the field of spirituality and science. Then this is Giriraj Swami Maharaj. His name is Giriraj Swami Maharaj. He is the in this very Hare Krishna land that we are sitting in. So he was the son of multi-millionaire. He was the son of multi-millionaire. So when he was a psychology student in Boston, and he's the one of the foundation pillars of the Juhu land. And there's the whole story actually how Juhu land got established and everything. So and yeah, son of a multi-millionaire. So when he came in touch with Srila Prabhupada, he said that in this 5 minutes of conversation with him, I learned what I haven't learned in 20 years of my life. And he left millions and trillions of dollars, and he's still a sannyasi. And he's like my uh, spiritual master, also my Diksha Guru, also. And in this, like he's one of the foundation, like one of the main persons, founding fathers of this temple, you can say, who fought for the establishment of this Radha Rasberi, Juhu land, Hare Krishna land. Yeah. I mean, these are some of his books actually, and they are available. And this Isle Below Temple is discussed every fortnightly on Ekadashi. Besides the life final exam, watering the seed, many moons, and many of his books. This is another personality, Loknath Maharaj. He was a villager. He's from a village which गूगल में ढूंढने जाओगे आरावड़े आरावड़े आपको गूगल पे मतलब देखेगा ही आरावड़े बेसिकली उसमें आपको इस्कॉन टेम्पल दिखेगा खाली जो वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है मैंने ट्राई किया एक्चुअली इस्कॉन आरावड़े इज अ स्मॉल विलेज इन फ्रंट ऑफ इन नियर शोलापुर we had come to Maharashtra, and he also has a story, and he did Padiyatra all over India actually, worked for, and now he's preaching globally, and he established his center also. Then there's Alfred Ford, Amrish Prabhu, his grandson of Ford Motors. He's also dedicated, and he has a lot of deep realizations about life, and he continued earning wealth, he continued progressing materially. George Harrison. George Harrison is another example who made albums on Hare Krishna. I mean, he helped spread the Hare Krishna movement. And at one point, he was the top selling artist, George Harrison. These are some of his labels. R.K. Maheshwari, Mahaprabhu, he was another prominent lawyer who helped establish Juhu Temple. ये क्लब में रम्मी खेलते थे पहले ताश रम्मी so Thar Jamkhana. So he just saw a newspaper. He saw that white people they are establishing this temple, Hare Krishna land. They are coming up with a new temple. So he saw that अंग्रेज लोग का मंदिर से क्या लेना देना है. So out of curiosity, he just came, and his purpose was that कि through logic and argument, I will prove them that मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इनका गड़बड़ मैं एक्सपोज करके रहूँगा. वो मूड से आए थे ये. But he felt that I've been stumped somehow. When he had discussions, he said I've been bowled over, and then he dedicated his life over here, and he continued his law practice. And he's passed away a few years back. Steve Jobs, he credits Hare Krishna Prasadam because when he was in the struggling period, he used to have wholesome meal with the Hare Krishnas in one city. Donald Trump also is said to have attended Rath Yatra. He is also said to have gone. There's Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard is like a famous politician who was in Joe Biden's party earlier, and she's also having a Hare Krishna background. And she stood up for when ISKCON was attacked in Bangladesh. She rose her voice. Her name is Tulsi. So, and she can be one of the future presidential candidates.
So this was the message of our founder Srila Prabhupada: stay high forever. You know, when you have alcohol or consume something like that, you may have high for some time and then fall. So he gave this method by which we can remain high forever. Thank you. Hare Krishna. Since we've got overboard time wise, I think like question and answer can be addressed. Like I'll be around and others will also be around. You can come up to me with queries during the course of our meet. Hare Krishna. Sorry, I went over time. हरे कृष्णा। सब लोग बैठे रहिए, अभी एक शॉर्ट ड्रामा है 5 मिनट्स का। एंड इस ग्रेस अद्वैत हरि प्रभु को एक बार धन्यवाद देते हैं by loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.